चौथी गेंद छोटी डबल से एक सिंगल एक रन के साथ शिवम दुबे को स्ट्राइक देगी। शिवम दुबे 7 गेंदों में 5 की विजयी स्कोर पर लड़ाई करते हुए 10वां ओवर है इस पारी का भारतीय टीम के 5 विकेट चाहते हैं। शिवम दुबे सामने अंदर तरफ आती हुई गेंद ऑफ साइड पर शॉट किया जाने से गेंद गई लेफ्ट साइड पर साउंड कम रहा एक सिंगल भी आसानी से मिल जाएगा। एक रन के साथ वापस से हार्दिक पांड्या साहब इस ओवर की केवल एक गेंद बाकी है। 10वां ओवर इस पारी का लास्ट बॉल इस ओवर की हार्दिक पांड्या साहब राउंड ऑफ विकेट गेंदबाजी हार्दिक पांड्या और स्ट्राइक चल दिया बॉल को बल्ला कार्य गेम की लाइन से ओवर की समाप्ति यहां पर बॉल से 10 ओवर के बाद 57 रन 5 विकेट के नुकसान और ईश्वर जोशी जी की तरफ से $1 की सुपर चैट आई थी। माफ चाहिए ईश्वर जोशी जी मैं देख नहीं पाया। #ईश्वर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। #ईश्वर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितने भी लोग लाइव देखें अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं ईश्वर जोशी जी बहुत धन्यवाद करेंगे आपका तो $1 की सुपर चैट के लिए #ईश्वर कमेंट बॉक्स में लिखिए सब भारत और साउथ अफ्रीका के इस मुकाबले के साथ YouTube के जरिए हम लाइव जुड़े हैं और YouTube पर $1 की सुपर चैट आई है ईश्वर के बाद 10 ओवर के खेल की समाप्ति हो चुकी है। क्या ओवर लुंगी एमडी क्या बनेंगे लुंगी एमडी के बारे में इनके साथ करेंगे शिवम दुबे पहले बॉल ओवर द विकेट खेलबाजी शिवम दुबे सामने पहली गेंद शॉट ऑफ एंड बॉल पुल किया गेंद को पीछे इस वाले पर फील्डर है रन केवल 2 ही मिलेंगे। 2 रनों के साथ उनकी शुरुआत की 2 रनों के साथ शिवम दुबे स्ट्राइक के पास रखेंगे। इस पारी का 11वां ओवर है। शुरुआती 10 ओवर में 57 रन आए बचे हुए 10 ओवर में 1 से की जरूरत है जो मौजूदा रन है उससे भी 2 गुना से ज्यादा रन चला गया है। उसकी के एक और पुल शॉट लेकिन यहाँ पे एक सेकंड के साथ स्ट्राइक वापस से हार्दिक पांड्या को दिए। हार्दिक पांड्या 3 गेंदों में 5 विकेट शिवम दुबे क्या भारत को 7 रन 5 विकेट के साथ 16-5 जीत है। और पिस्टल के बाहर गए कम्स विद अ शॉट हमारी यात्रा से गेंद किनारे पर हार्दिक पांड्या को पहला छक्का और पिस्टल के बाहर बुलेट बॉल थी कवर्स के ऊपर से उठाकर खेला इस बार और कवर्स की फील्डर को दर्शक बना दिया है। पहला छक्का हार्दिक पांड्या की वजह से 6 रनों के साथ पांड्या पहुंच चुके हैं 11 पर 11 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर हार्दिक पांड्या और 56 गेंदों में 122 रनों की जरूरत। 5वीं गेंद लाइन लेंथ में बदलाव किया है तुरंत आकर की तरफ लाइन गेंद को लेकिन उस गेंद पर भी एक सिंगल निकाली है। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। शाम का ये समय है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला है। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला है
ताकतवर शॉट के लिए जाने जाते शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। 11 ओवर के खेल समाप्ति हो चुकी है। 12वें ओवर की शुरुआत केशव महाराज गेंदबाजी करेंगे। महाराज का 21वां ओवर इस पारी का बारहवां। पहली गेंद ऑफिसर के बाहर है, कवर के सामने शॉट 1 सेकंड और पूरा किया है। ओवर थ्रो कर बैठे और ओवर थ्रो के चलते दूसरा रन भी मिल जाएगा। डायरेक्ट हिट लगाने का प्रयास था लेकिन स्टंप पर बॉल लगी नहीं। जी मिडविकेट की फील्डर के द्वारा शतक दोबारा गेंद को फील्ड किया जाए। 1 रन की जगह 2 रन दौड़ पूरे गेम। दो रनों के साथ तो भी 12 के नीचे स्कोर पर 13 गेंदों में 12 रन पहुंच चुके शिवम दुबे। दूसरी गेंद टाइम का बॉल 3 दशमलव सीमा का दीवार छह। शिवम दुबे की वजह से भी पहला छक्का आता है। कमाल की फोटो है, कमाल के फोटो है इनके पास। क्या गजब का ऑटोमेट का इस्तेमाल करते हैं। अंदर आती हुई गेंद सिर्फ दिशा बदली और छक्का कर दिए। आदत पर खिलाड़ी शिवम तीसरी गेंद इस बार लाइन में बदलाव किया। ऑफिसर की बाहर गिराई गेंद और ऑफिसर की बाहर की गेंद ताकि वजह से बस रोका है। शिवम दुबे 15 गेंदों में 18 रन पहुंच चुके हैं। चौथी गेंद इस ओवर की एक क्विक बॉल 95.5 किलोमीटर की गति से गेंद जब गेंदबाजी करते हैं कि महाराज को स्टंप के आसपास से गेंदबाजी करते हैं। एक गेंद लेग स्टंप के बाहर भी उस पर छक्का लगते हैं। दो गेंदें अभी भी इस ओवर की बाकी हैं। 5वीं गेंद इस ओवर की यहाँ भी फील्डर रवि देगा। केवल एक गेंद बाकी महाराज को। India performance is not satisfactory in okay. ये गेम अगेंस्ट अब देखिए आप थोड़ा सा चिंता का विषय जो है भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय सिर्फ ये नहीं है कि आज कैसा खेलेंगे, क्योंकि आज बराबरी की टीम से टक्कर हुई है। इसके पहले जितने भी मुकाबले हुए वो एक तरफा हुए। अब एसोसिएट टीम्स जो है उनसे मुकाबला जीतना बात अलग है, लेकिन अगर आप बराबरी की टीम के अगेंस्ट इस तरीके से शुरुआत करेंगे कहीं ना कहीं चिंता का विषय है भारतीय टीम के लिए। ओवर की समाप्ति हुई 12 ओवर की समाप्ति 76 पर 12 रन और अब बचे हुए 8 ओवर में 112 रन की जरूरत। 8 रन आने की जरूरत। 8 ओवर में 112 रन की आवश्यकता थी तो जीतने के लिए